प्रोटीन हैज बिकम सच अ हॉट टॉपिक कि आजकल हर जगह उसी की बात होती रहती है. बट कैन वी स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन ऐसे ही? What to believe, what not to believe? Hi, I'm Sakshi Lalwani and I'm a healthcare consultant and nutritionist by profession. Today I'm going to walk you through some myths that women have around protein supplements. क्या protein supplements से side effects हो सकते हैं? Generally, protein supplements are considered to be a safe and an important supplement. In fact, the advisory issued by the food regulator highlighted the significance of protein in the diet and said that apart from giving a sudden energy boost to the body, protein also nourishes our metabolism, which in turn helps in our digestion and generation of energy. But in special cases, those who already have a pre-existing condition, are lactose intolerant, or who may be taking it in the wrong way, might experience after effects such as indigestion, bloating or more. इसीलिए आप जब भी प्रोटीन पाउडर लें, हमेशा recommended dosage लें, जो प्रोडक्ट में mentioned होती है या as directed by your physician. The second myth is that protein powder is only for gym goers. या अगर हमने प्रोटीन ले लिया तो इससे बॉडी मस्कुलर हो जाती है. I am here to very confidently dispel this myth. This is not true. जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन की जरूरत सबको होती है. It's not only for the gymmers. Protein is an essential part of our nutritional needs. ये हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि डाइजेशन, हार्मोन रेगुलेशन एंड मच मोर. All the more reason कि हम अपने प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दें. Women especially need approximately 50 to 60 grams of protein per day. As for making women muscular, ये भी जरूरी नहीं है. Protein essentially helps you build overall strength and stamina. Muscle gain will only happen if you're doing specific exercises with it, जिनका मेन पर्पस ही होता है बॉडी बिल्ड करना. तो इनक्रेडिबल हल्क बनने का कोई चांस नहीं है. मिथ नंबर 3, प्रोटीन सप्लीमेंट से हमारा वेट गेन हो सकता है. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. सिर्फ अकेले प्रोटीन पाउडर से आपका वेट नहीं बढ़ेगा. In fact, protein is an excellent enabler for weight management since it helps you keep full for longer. तो इससे आपकी स्नैकिंग भी कम हो जाती है, आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है और वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है. सो वेट बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है. While we are discussing the myths of protein, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है, वो ये है कि कौन सा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए. The one that I recommend is HK Vital's Protein Up Women. इसमें है 60% ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन with whey, soy and collagen which helps build muscle mass and strength. Garcinia cambogia and green tea extract to help with weight management. 100% RDO of biotin and collagen with powerful antioxidants like vitamin C and E help maintain strong hair and skin. A trusted and holistic protein supplement like this one will help you protein up the right way. And now we also have HK Vital's Protein Up Women in a vegetarian variant as well. तो आपकी जो भी डाइट प्रेफरेंस या लाइफस्टाइल हो, आप आराम से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं. लेकिन फिर भी एक मिथ परसिस्ट करता है. हमारा चौथा मिथ है कि प्रोटीन पाउडर्स का ना टेस्ट बहुत खराब होता है, चाहे वो फ्लेवर की वजह से हो या पाउडर के टेक्सचर की वजह से. One reason can be due to the artificial sweeteners and flavors that are added to the protein powder to make it more palatable. However, since they are artificial in nature, they actually leave a bitter aftertaste instead. The other reason can be because the powder may not be refined. इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे to find the right protein powder for you. So there you have it, protein related myths busted. Now that you are armed with all the knowledge, you can easily get back onto your health journey. Be sure to subscribe to our YouTube channel for more such information.